हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ सांग माने आज आम पेडागोजीर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँ आमर टीजीटी प्रीवियस क्वेश्चन बा एग्जाम रे आसला यही सब क्वेश्चन गुड़िक चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा। फास्ट कौन कही क्वेश्चन देखु ना इन एन इनक्वारी बेस्ड क्लासरूम द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम एंड टेस्ट द hypothesis as per Piaget theory of cognitive development, in which of the following stages should the learner ideally be? सांग मैंने ये कौन कही ना पियाजेट को थ्योरी कही आउ ये गोटे माने वर्ड अच्छी देखु हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस माने कौन ना कल्पना करवा बा इमाजिन करबो ताहले पियाजेट को जो हाइपोथेसिस जो वर्डटा थिला हमरो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थिला एग्जाम रे कम टाइम थाए आउ क्वेश्चन बहुत लेंदी और बड़ बड़ भी थाए किंतु आमे क्वेश्चन को पढ़िकिना बुझिकिना कला बेलू टे टाइम बेसी जाए तेणु जदि आम देखी दौचु किसी की पॉइंट अच्छी से की पॉइंट को बेस करके आम पेडागोजीर क्वेश्चन को सॉल्व करें ताहले जेहेतु हाइपोथेसिस वर्डटा अच्छी देन आंसर हो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन ताहले सांग माने देखंतु ना माइक्रो टीचिंग रो जो कॉन्सेप्टटा केउठारु डेवलप होइथिला ना एटा आंसर हो जिवो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑप्शन बी। नेक्स्ट कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वाक्षर भारत मिशन ताहले सांग माने स्वाक्षर भारत मिशन रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना प्रमोट एडल्ट एजुकेशन ऑप्शन ए। नेक्स्ट कौन कही देखंतु ना in which of the following activities does a teacher present a question or situation and gives learners a short time to answer freely and suggest solutions or ideas ताहले से कहते कौन ये क्वेश्चन ना इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ए भितर को एक्टिविटीज से टीचर कौन करता ना गोटे क्वेश्चन किंबा सिचुएशन गोटे पिलार आगे प्रेजेंट करता आकु कम समय दे था एवं कही मुक्त भाव में तुम्हें तुम आंसर दियो फ्रीली आ से किसी सजेस्ट करता कौन ना किसी सॉल्यूशन आउ आइडिया टीचर कौन सजेस्ट करता क्या ना लर्नर बा शिक्षार्थी को ताहले आ भितर कोटा आमर माने करेक्ट हो फास्ट कही डेमोन्स्ट्रेशन सेकेंड कही केस स्टडीज थर्ड कही ड्रामाटाइजेशन नेक्स्ट कही ब्रेन स्टॉर्मिंग ताहले आंसर हो जामर ब्रेन स्टॉर्मिंग कहीं ना जेहेतु कौन ना गोटे सिचुएशन शिक्षार्थी आगे रखा जाउची एवं ताकू किसी आइडिया दिया होची जहाँद्वारा कि से चिंतन करिकी ताकू एक्सप्रेस करिवो तेणु आंसर हो गला कौन ना ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट फास्ट कौन कही जो सॉरी 55 कौन कही क्वेश्चन ना इफ ए स्टूडेंट इज एंगेज इन इनसाइटफुल थिंकिंग synthesis and ability to react the new novel situation then as for Sternberg's triarchic theory of human intelligence which intelligence is he displaying ताहले कौन कहला ना इफ ए स्टूडेंट इज एंगेज इन इनसाइटफुल थिंकिंग सिंथेसिस आउ एबिलिटी टू रिएक्ट टू न्यू नोवेल सिचुएशन देन as for Sternberg's triarchic theory of human intelligence which intelligence is he displaying ताहले स्टर्नबर्गर जो ट्रायर्किक थ्योरी थिला तो पिलाटी गोटे नुआ सिचुएसन गोटे कौन न्यू नोवेल सिचुएसन से किपरि चिंता करुच्ची किपरि सिंथेसिस संश्लेषण करी माने एबिलिटी टू रिएक्ट हैला माने से सिचुएसन को से किपरि भाबे रिएक्ट करची तो यही भितर माने स्टर्नबर्गर से इंटेलिजेंस भितर कोटा आमर करेक्ट हो ना आंसर हो क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट 56 रे कौन क्वेश्चन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्कूल करिकुलम एट रेगुलर इंटरवल्स ताहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन डा स्कूल करिकुलम को डेवलप करुच्ची रेगुलर इंटरवल मध्य ना आंसर हो गला कौन ऑप्शन डी एनसीईआरटी ताहले एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म कौन आपण माने मते कमेंट माध्यम रे जणेबे। नेक्स्ट
57 कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम रो मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना टू डेवलप टेक्स्ट बुक्स। ऑप्शन बी कही टू प्रमोट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी कही टू इनक्रीज एनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट्स। ऑप्शन डी कही टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वर्किंग पॉपुलेशन। ताहले डीपीईपी बा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम रो उद्देश्य कौन थिला ना टेक्स्ट बुक को डेवलप करवा ना प्रमोट कर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ना इनक्रीज कर एनरोलमेंट माने नामांकन पिलांकर नामांकन आउ रिड्यूस कर ड्रॉप आउट माने जो माने स्कूल अधारू कौन विरति नहीं जाती पाठ पढ़ी न था पाठ छाड़ी था ड्रॉप आउट कर ताहले डीपीईपी रो मेन उद्देश्य होची इनक्रीज एनरोलमेंट किपरि पिला माने अधिक विद्यालय रे नाम लिखाइबे आ किपरि ड्रॉप आउट किपरि रिड्यूस हबो तार मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट ए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्राम फॉर स्लो learners in the age group of 12 to 14 years is developed in order to implement this program in a school which sampling technique would be most ideal। ताहले कौन कहला ना ए स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्राम फॉर स्लो लर्नर को पाए गोटे प्रोग्राम बा आधार करी गोटे इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल को स्पेशलाइज करा जाउची बेसिकली को ग्रुप रो ना 12 टू 14 ईयर पिला मानक पाए से कहूँ इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम इन ए स्कूल व्हिच सैम्पलिंग टेक्निक वुड बी मोस्ट आइडियल। ताहले ए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करिया पाइका बा ताको कौन इम्प्लीमेंट बा ताको किपरि लागू करा जिवो माने से कार्यक्रम को किपरि स्टार्ट करा जिवो सेथिबाई को टेक्निकटा बेस्ट होची ना जजमेंटल सैम्पलिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट जजमेंटल सैम्पलिंग। नेक्स्ट नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वाज लॉन्च बाय। ताहले NVEQF ताहले ए जो फ्रेमवर्कटा कहा द्वारा लॉन्च करा ना AICTE रो फुल फॉर्म कौन आपण माने खोजिकी कमेंट माध्यम जनइबे एवं निजे नोट डाउन करदेबे। नेक्स्ट अटेनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। ताहले अटेनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड एलिमेंटरी एजुकेशन एलिमेंटरी माने प्राथमिक शिक्षा पई को एटीट्यूडटा माने बेसिकली ये रोहुची अटेनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन रो उद्देश्य पई कोटा गोटे बेस्ट कहूँ आ भर कौटा को फॉलो करिवो क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्फिडेंस रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन जेहेतु प्राथमिक तो सेटा फास्ट होगा कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट NIOS which frames the courses of studies for secondary education is a body art। NIOS रो फुल फॉर्म के कहि परिबो आपण माने मते देखिकिना एटा मते कमेंट रे जणांदु NIOS रो फुल फॉर्म कोन। नेक्स्ट NIOS which frames the courses of studies for secondary education is a body art एटा होची नेशनल लेवल रे। NIOS टा कोन काम ना NIOS रो काम होउची जेमती कि आमर कॉलेज मानक कौन ओपन यूनिवर्सिटी अच्छी आम संबलपुर माने डिस्टेंस जो माने विद्यालय बा कॉलेज बा यूनिवर्सिटी को जाई पारु नांती से माने घरे रहिकिना पाठ पढ़ी पारछन्ती तेणु NIOS मध्य एटा गोटे स्कूल लेवल गोटे प्रोग्राम जो माने कि जो पिला माने बा छात्र माने विद्यालय को आसी पारु नांती से माने कौन घरे रही मध्य डिस्टेंस माध्यम रे से माने कौन कोर्स करें स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट करें। ताहले NIOS फुल फॉर्म के कहि माने कौन देखिला कौन NIOS फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग आउ थोड़ा अपन टिके देखिकी कन्फर्म हो जाए। नेक्स्ट द मैक्सिमम गोल ऑफ एजुकेशन इज ताहले एजुकेशन रो मैक्सिमम गोल कौन
ना upbringing of the progeny. Option B, working for the nation. Option C, diffusion of knowledge, values, attitudes, and norms of relationship required for playing adult role. Option D, management of the organization. ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ସ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେଇଂ ଆଡଲ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅପସନ୍ ସରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଆମର ସି ନେକ୍ସଟ when Mrs. Rina saw that many students in her class were not able to do well in Hindi in spite of all her efforts, she decided to form groups so that students learn from each other. What form of teaching is this? ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା when Mrs. Rina saw that many students in her class were not able to do well in Hindi in spite of all her efforts, she decided to form groups so that students learn from each other. What form of teaching in this? ମାନେ ମିସେସ୍ ରିନା ଜଣେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେଟାକୁ ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇବ ଆଉ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଅର୍ ଟ୍ୟୁଟରିଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରସ୍ପରଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ ତାହେଲେ ପିଅର୍ ଟ୍ୟୁଟରିଂ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ A teacher who adopts the play-way method of teaching is a believer of which school of philosophy? ताहले a teacher who adopt the play-way method of teaching माने play-way method teaching से बिलीव करछनी ताहले से को इयर ना नेचुरलिज्म ऑप्शन ए नेक्स्ट देख पिला माने संग माने कोन कहिसनी ना Nitya Prakash, a specialist at Kennedy High School, Hyderabad, says teachers there have found that classroom rules are most effective when teachers, parents, and students are equally committed to follow them. At the beginning of each year, a note with specific responsibility is signed by each of the parties involved in this contest. As a teacher, you would accept which of the following? Now option A कही send the student out from the classroom for the misbehavior एटा नेगेटिव अच्छी नेक्स्ट कौन कही ना ऑप्शन बी डेवलप क्लासरूम रूल्स आई एम अनविलिंग टू एनफोर्स एटा भी नेगेटिव अच्छी सप्लाई स्टूडेंट एंड पेरेंट्स विथ इभालुएसन प्रोग्रेस एटा टिके पॉजिटिव अच्छी नेक्स्ट कही डीटा ना इग्नोर व्हेन देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस एट द बैक साइड ऑफ द क्लासरूम एटा तो पूरा नेगेटिव जदि स्मॉल अमाउंट हो कि बेसी अमाउंट हो जदि क्लासरूम में डिस्टर्बेंस है माने कौन आमर शिक्षण केबे भी फलप्रद हो पारिबनी ताहेले तीनटा जेहेतु नेगेटिव अच्छी ऑप्शन सी बड़ बड़ क्वेश्चन को भी आम बुझिकिना माने कला बेले बेले भी टाइम पड़े आम कौन करवा क्वेश्चन पढ़ी जदि आम ऑप्शन देखा ऑप्शन नेगेटिव ऑप्शन को काटी काटी आम पॉजिटिव आंसर पाई परिबा नेक्स्ट ना ऑप्शन 66 रे कौन कही ना मिस्टर शर्मा फाउंड दैट the students in class 5 did not perform as well as the student of class 4. When he investigated the matter, he realized that this was due to the noise that came from the adjoining market. Which of the following which was on the side of class 5? The barrier is communication may be called as ताहेल कौन कहला ना मिस्टर शर्मा देखिले जे स्टूडेंट इन क्लास 5 डिड नॉट परफॉर्म आज वेल माने क्लास 5 रो पिला माने क्लास 4
को अपेक्षा भल परफॉर्म करिपारुनाहांती जेतेबेले से इन्वेस्टिगेट कले से मैटर को से रियलाइज कले एटा होचे काहेकि ना द नॉइज दैट came from the adjoining market which was on the side of class 5 पाखे जो मार्केटा अच्छी सेठार जो नॉइज आसुची जहाँद्वारा कि पिलामाने मन देकी पढ़ी पार नथिबे तेणु से कहूँ यही बैरियरटा दिस बैरियर इन कम्युनिकेशन मे बी कॉल्ड एज सेमांटिक बैरियर फिजिकल बैरियर इमोशनल बैरियर मेंटल बैरियर एटा ऑप्शन बी हेगला करेक्ट फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट identify the reading disorder which is characterized by trouble with reading although the person has normal intelligence. Problems may include difficulties in spelling words, reading quickly, writing words, sounding out words in the head, pronouncing words when reading aloud and understanding what one reads. ताहेले जदि रीडिंग रे डिसऑर्डर देखागला आम जानी डिसलेक्सिया ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियालिज्म ताहेले आइडियालिज्म अनुसार कोटा गोटे शिक्षार लक्ष्य ना ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट द एनसीईआरटी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन एनसीईआरटी रो हेडक्वार्टर कोडी ना न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आज फॉर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट each school has to take children from poor background to the tune of 25%, option C. Next who among the following is a representative of absolute idealism ताहेले absolute idealism रो रिप्रेजेंटेटिव किए अछनी ना स्प्रूस ऑप्शन डी स्प्रूस। नेक्स्ट in a class the students are shown a video on electrical repairs. If a student from this class is later able to do electrical repairing in his house, what kind of learning has taken place? माने से कहूची क्लासरूम रे गोटे इलेक्ट्रिकल रिपेयर पाइंका तांको गोटे पिला मानको गोटे वीडियो देखा जायथला एवं जदि से पिलाटी परे क्लासरूम परे जदि से रिपेयर विषय घरे जदि से करिपारुची माने से कामटा करबा दक्ष होचे ताहेले से प्रकार लर्निंगटा को स्थान होची आंसर हे जिवो हमर लैटेंट लर्निंग लुक्कायित शिक्षण बा लैटेंट लर्निंग। नेक्स्ट इन इंडिया देयर आर वेरियस बॉडीज गवर्निंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम सच एज इस्लामिक माद्रास स्कूल whose boards are controlled by local state government or autonomous or affiliated with Darul Uloom Deoband. Next, according to NCF 2005, at the primary stage, science and social science should be integrated to form environmental studies, environmental science, ecological studies, इकोलॉजिकल साइंस जेहेतु एटा प्राइमरी स्टेज कही आंसर हो एनवायरमेंटल स्टडीज जदि एटा हायर कही था ताहले एनवायरमेंटल साइंस आम कही था। नेक्स्ट द यूजीसी वाज फाउंडेड इन द ईयर यूजीसी केबे हेइतला हमर ना 1956 यूजीसी रो फुल फॉर्म कोन आपण माने कौन सर्च करके जदि जानते कमेंट मध्यम जनाचु कहीं यहाँ एग्जाम रे बहुत थर आसी हो सांग मैंने आज आम 25टा क्वेश्चन डिस्कसन कलु यहाँ प्रीवियस ईयर टीजीटी रो 2015 कि 16 साइंस स्ट्रीम रे ये सब क्वेश्चन आसाला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिले आम जापर जे क्वेश्चन सब केमती कौन आसूची जहाँद्वारा कि आमको बेसिक नॉलेज आसो। हो सांग मैंने रही जदि आपको वीडियो टी भल लगे ताहले लाइक करेंगे आउ कमेंट मध्यम जनइबे रही जय जगन्नाथ।